Let's start complex analysis chapter. This chapter is useful for civil services examination, where is state services examination, CSIR NET, where lectureship examinations and all. Okay, so अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें जो इसके सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में analytic functions, Cauchy-Riemann equations, Cauchy's theorem, Cauchy's integral functions, formula, power series, representation of an analytic function, Taylor series, similarities, Laurent series, Cauchy's residue theorem, contour integration. So all these things we'll discuss. Okay, so let's start this chapter with the introduction of complex number. वैसे ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में तो we must be aware. Introduction of complex numbers. Okay, so first thing that why we need complex number at the first place. In real number systems, if we try to solve x square plus 1 equals to 0, then we cannot find solution in real number system because x square is positive and 1 is a positive number anyway, so 2 positive cannot add up to 0 in real number system, but in complex number system it is possible. Okay, so x square equals to minus 1, so here x equals to root of minus 1, so this root of minus 1 is represented as iota. Okay, so basically generally we denote a complex number by z, which is represented as x plus iota y, where this x is real part of z and this y is imaginary part of complex number z. Okay, one more thing कि यहाँ पे जो x and y है, these are real numbers, they belongs to set of real numbers, so that is z. अब इसके जो बेसिक थिंग्स है लाइक वो फर्स्ट थिंग इज मॉडुलस. Modulus of complex number z is defined as root of x square plus y square, means root of real part of z square plus imaginary part of z का square, इसका square root, ये होता है modulus of z. एग्जाम्पल लेना चाहो 3 plus 4 iota. इफ someone asks कि इसका मॉडुलस क्या है, सिंपल मॉडुलस क्या होगा, x का स्क्वायर, x is 3, y is 4 का स्क्वायर का रूट, दैट इज 5. ठीक है, these are very basic things. ये हम लोग जल्दी से कवर कर देते हैं. इसके बाद देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट अस एक्स, दिस इज रियल एक्सिस, this is imaginary axis, and this representation is known as argand plane. So in argand plane we can represent complex number z as we represent x, y coordinate in 2-dimensional system. So here let us say this is your z, this is point P which has coordinate z. Join this, there is nothing but x, y, so this distance is y, this is x. We know that what are coordinates, what is x? X is nothing but distance of this point on x-axis. Similarly, y coordinate denotes distance of that particular point on y-axis. Let us say this is theta, and this OP, let's say this is r. So OP, what is OP? The distance between origin and x, y. With distance formula we can say this. Okay, so this is nothing but modulus of z. So what is modulus of z? Modulus of z is nothing but distance of that complex number from origin. Okay, similarly here what is this theta? Theta is angle which line OP is making with positive direction of x-axis, and this is known as argument or amplitude of complex number z. यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी होगी कि जो थीटा है, it can take infinite values.
एक लेट अस से कि थीटा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री 2 पाई प्लस 45 डिग्री 4 पाई प्लस 45 डिग्री एंड सो ऑन, इन सब पे जो ये थीटा होगा वो सेम ही होगा, बिकॉज थीटा इसको 2 पाई रोटेट करके प्लस थीटा करोगे देन आल्सो यू विल गेट दिस लाइन ओनली। ओके, सो इस थीटा की वैल्यू को हमें यूनिक बनाने के लिए थीटा पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना होगा। So we impose a restriction on theta that this theta should lie between minus pi and pi. Here pi is included, minus pi is excluded. Then that value of theta which obeys this restriction is known as principal argument or principal amplitude of complex number z. Okay. अब इसमें देखते हैं हम लोग कि हम लोग जैसे अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली इसका आर्गुमेंट अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन जाएंगे तो पाई प्लस होगा, बट पाई प्लस तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में ले नहीं सकते, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पाई/2 प्लस समथिंग होगा, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट थीटा शुड ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। ओके, पाई इंक्लूडेड माइनस पाई एक्सक्लूडेड। सो उसके लिए हमें थीटा ऑब्टेन करने का सिंपल तरीका है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो हियर इफ वैल्यू इज थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगी, टेन, we will calculate this is theta, then here we take pi minus theta, here we take minus pi plus theta, minus theta. Then this the resulting angle will always lie between minus pi to pi. Okay, first thing how we will calculate theta, this is your z x comma y and this is theta. We are assuming theta in first quadrant, means जो theta होगा यहाँ पे tan theta, what is tan theta, this is y and this is x, so tan theta is y by x. So here जो tan theta होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसमें हम लोग tan theta कैलकुलेट करेंगे विद बाय टेकिंग मॉडुलस ऑफ y पे, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव वैल्यू ओनली, क्योंकि थीटा को 0 से π/2 के बीच में रखना है। वैसे जो भी यहाँ से थीटा आएगी उसके बाद विल चेक कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से और प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी डिसाइडेड। ठीक है, जैसे अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, तब क्या होगा, थीटा विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला एंड आवर आंसर विल बी माइनस पाई। लेट्स टेक एग्जांपल, let's take example for this. Let us say root 3/2 minus iota by 2. This is complex number. Then find its argument, its principal argument. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग tan थीटा क्या होगा, what is y, y is minus half and x is minus 3, but we have to take modulus of this, so this is 1/2 divided by root 3/2 modulus, so it will be 1 by root 3. So theta is nothing but 30 degree, so pi by 6. Now we have to check that where does this complex number lies. So here x is negative, y is also negative, so it lies in third quadrant. But in third quadrant, what is value of principal argument? See, this is minus pi plus theta, so our answer will be minus pi. What is theta? Theta is pi by 6, so minus 6 pi plus pi minus pi by 6. So this will be our answer. It's very simple. Let's take one more example. Let us say 3 minus 3 plus 4i. This is from there. Then see, first calculate tan theta. Tan theta will be 4 by 3 because we have to take modulus value. So theta is tan inverse 4 by 3, and this is positive, so this will lie between 0 to pi by 2. Now see, x is negative and y is positive, so this complex number representation lie in second quadrant. यहाँ पे what is principal value argument, that is minus pi minus theta, so answer will be pi minus tan inverse 4 by 3.
So that will be argument of this given principal value argument of this given complex number. So that way it can be done. So the important thing that we have to remember this representation. Okay, and why we did like that? Because we have to make sure that theta should lie between minus pi to pi, where pi is included and minus pi is excluded. So it's as simple as that. Then there is some terminology. What is complex conjugate? Complex conjugate. What is complex conjugate? Complex conjugate. Let's Z is this expression and then Z bar. Complex conjugate is denoted as bar on that complex number Z bar. That will be x minus iota y. Basically iota is replaced by minus iota. अगर इसको हम आर्गन प्लेन में देखें तो if that is z, that is x y, okay, then this will be z bar, because this is x minus y, x positive y negative. So basically if argument of z is theta, then argument of z bar will be minus theta. And modulus of what is modulus? What is the distance of z? Root x square plus y square. This distance is also x square plus y. So modulus of z is equals to modulus of z. दोनों का modulus equal होगा. Okay. इसके बाद some of the formulas which will be useful are z2 whole square will be z1 modulus square, z2 modulus square plus 2x real of z1 z2 bar. ये कैसे है? Okay, let's see z bar, that is x plus iota y. Z bar is x minus iota y. This is simple a plus b minus b formula. So x square minus iota y square, that is x square plus y square. This is nothing but modulus of z square. So we have z bar is modulus z square. So modulus z1 z2 square can be written as z1 z2 z1 z2 bar. Now if we expand this, then this will be z1 z1 bar, which can be written as modulus z1 square modulus z2 square plus z1 z2 bar plus z1 bar z2. Okay, so here notice that इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 z2 bar plus z1 z2 bar का bar, because basically z bar, okay, if we say z1 plus z2 bar, this can be written as z1 plus z2 bar और z bar का bar is z. ठीक है. So now again one more thing, if we add z and z bar, then we will get x plus iota y plus x minus iota y. So this is 2x, that is 2 real of z. यहाँ पे भी अगर we say कि z1 z2 bar some complex number z है, तो ये जो next है that is z bar. So this will be nothing but twice real part of z1 z2 bar. तो इसको हम लिख सकते हैं z1 square plus z2 square plus 2 real of z1 z2 bar. This is z1 plus z2 के modulus का square. So this formula will be very useful. ऐसे ही we can write कि z1 minus z2 के modulus का square will be z1 modulus square. All will be same except here it will be minus. If here it is minus, here it will be minus. Okay. Now let us take one simple example. No, first let us see polar form. Polar form of complex numbers. Okay. Simple. In argument plane we know that this z is represented like this. If this is argument theta, then let us say OP, this, then which is modulus z obviously is r, then this will be r sin theta and this will be r cos theta. This OA and AP. OA is also x, so x is equals to r cos theta, and y, that is AP, is r sin theta. So z can be written as x plus iota y. x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y की वैल्यू पुट कर दो, r sin theta, और दोनों इसको कॉमन ले लो. So this is polar form of complex number. This can also written as r raised to iota theta.
cos theta plus iota sin theta can be written as e raised to iota theta. This is Euler form of complex number. Okay, so this is just in representation. This polar form will be useful in very questions. Okay, now let us take one example. One question. If z plus 1 by modulus z is given some a, then find z corresponding to maximum or minimum value of modulus z. This is the question. First thing, what will be a? Can a be complex number? No, it cannot be, because a is modulus of z plus 1 by z. Modulus is always a real number, so a will be real number, plus it will be positive as well. Okay, so now modulus z1 plus z square is nothing but modulus of z square plus modulus square plus 2 रियल, अभी हमने पढ़ा 1 by z into z bar. Okay, z1 z2 bar. Oh, this is nothing but z a, so a square हो जाएगा. Now let us say z is r e iota theta in Euler form. We represent z, then what will be modulus z? Modulus z is r. Obviously modulus z is r. So modulus, so this will convert into z plus 1 by z whole square, r square plus 1 by r square plus 2 real part of what will be z bar. Z bar is r e to the power iota replaced by minus iota, and z is iota theta, that is equals to a square, that is r square plus 1 by r square plus twice real part of e की power minus iota 2 theta, that is cos 2 theta minus iota sin 2 theta. इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये हो गया. Now next, so this can be written r square 1 by r square twice real part of this. What is real part of this complex number? Cos 2 theta, that is equals to a square. अब इसको we can write 1 by r square plus 2 cos 2 theta can be written 2 cos square theta minus 1, that is equals to a square. This can be written there minus 2, that is a square minus रीअरेंज किया सिंपल. ठीक है, ये क्या है? ये तो r का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा. अब देखो हमें क्या है, मॉडुलस z की मैक्सिमम वैल्यू पे z की वैल्यू फाइंड करनी है. पहली बात, व्हाट इज मॉडुलस z? मॉडुलस z तो r ही है, सो जहाँ पे r मैक्सिमम होगा वो वहाँ पे z क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है. सो लेट अस टेक ए फंक्शन r minus 1 by r, then what is f dash r? f dash r is 1 plus 1 by r square, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा. मतलब अगर ये फंक्शन r minus 1 r लिया हमने तो ये हमेशा इंक्रीज करेगा विद वैल्यू ऑफ r. अगर r इंक्रीज करेगा तो f dash r भी इंक्रीज करेगा. इसका मतलब जब ये r minus 1 by r मैक्सिमम होगी तब r की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी. अब इसका मतलब ये जो r1 minus 1 by r का होल स्क्वायर है, ये जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहीं पे r भी मैक्सिमम होगा और वो वैल्यू ही अपना z डिसाइड करेगी. सो r minus 1 by r स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ होगा? जब ये a स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा. इसका मैक्सिमम मतलब इसका पूरे का मैक्सिमम, इसका मतलब ये मिनिमम होगा तभी तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू होगी 0. तो a स्क्वायर माइनस 0 दैट इज a स्क्वायर. और 0 कहाँ पे होगी? कोस स्क्वायर थीटा 0 कहाँ पे होगा? देन थीटा विल बी पाई बाई 2. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम देखें r माइनस 1 बाई r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर r. अब इसमें दो केस है. इफ r इज ग्रेटर देन 1 बाई r देन r माइनस 1 बाई r विल बी a.
ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। सो इस केस में हमें मैक्सिमम देखना है, तो आर मैक्सिमम वैल्यू है तो ऑब्वियसली 1/r से बड़ा ही होगा। इन केस में वी आर सेइंग कि मॉडुलस z मैक्सिमम है। ओके सो मैक्सिमम, so modulus z that is r will be maximum when theta equals to pi by 2 and r minus 1 by r equals to a. यहाँ से we can get value of r, so this r square minus r minus 1 equals to 0. So what is r? R is equals to a plus minus b square minus 4ac upon 2a. ओके अब इसमें अगर हम माइनस लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 का रूट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन ए, बिकॉज दो पॉजिटिव नंबर है। ए तो ए स्क्वायर का रूट तो ऐसे ए स्क्वायर प्लस 4 का रूट ए से बड़ा ही होगा, तो इफ वी टेक माइनस तो यहाँ आर नेगेटिव आ जाएगा, बट आर तो नेगेटिव नहीं हो सकता बस। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन यहाँ पे, सो आर विल बी ए प्लस रूट ए स्क्वायर by 2, that is your r. So where modulus z that is r will be maximum when theta is pi by 2 and r this, so value of z what is e की power iota theta, so r is this and e की power iota pi by 2, so that is r iota, that is our z, this is the answer. Similarly we can do for minimum value of r, r minimum होगी तो 1/r maximum होगी, when r is minimum then obviously 1/r will be maximum, इसका मतलब 1/r will be greater than r, so then 1/r minus r equals to a. उसमें r minus 1/r था because r was greater there, because we were searching for the maximum of r या minimum. Simply यहाँ से we can get r here, यहाँ से, और theta will be pi by 2, so z will be r e की power iota theta. यहाँ से we can get r कैसे, let us say 1 minus r square equals to ar, so r square plus ar minus 1 equals to 0. What is r? Minus a plus minus b square minus 4ac upon 2a. Obviously we cannot take minus, so plus लेना पड़ेगा, so this will be value of r. So this is the answer of this question. So ये तो basics थे complex numbers के, और real chapter will start from next lecture. We'll